JC, we are live. Oh, lovely. Dr. Saab, welcome on board. Namaste ji. Namaskar so much. Madam ji, namaskar aapko bhi. Thank you for connecting me to your husband. But this is very good to see that both of you are working on the same subject called diabetes. Please tell us more about this, how this happened and how come you both are into diabetes? Well, we got married after having met each other in London. So I was basically studying there in the UK, and my Masaji, who lives in London, asked me if I was interested to see a girl there in the UK, and then perhaps move along those lines. Just destiny. So it was destiny. She's actually from Mumbai, but she had come to London, had to attend her brother's wedding. शादियों में तो दूसरी शादियां पक्की होती है ना, ऐसा है. So this is how it is. So this is a typical Indian wedding. I met her in London, and then perhaps we moved on and agreed, telling her fully well that I'm going back to Calcutta. I'm not going to stay in the UK forever. So at first, her father said, no, they always say that, but they stay back in the UK. But my wife, when that time Falguni mentioned, no, it doesn't matter. You stay here or you go back. I'm okay with it. So we came back, and she essentially is a housewife. But then over the years, I have managed to basically interest her in my subject, diabetes. So she had done courses in diabetes education. So she has become a diabetes educator. So she's a housewife and then part-time diabetes educator. I think everybody's housewife, whether they practice or they do not. First, you have to be a housewife. Yeah. Whether it's Indra Nui or anybody, they have to do what, and you have to balance it out. But yes, I think diabetes is one of the most interesting subjects in medicine. I do not understand the other parts, but I think diabetes is that it affects so many people, and education is very mandatory in diabetes. So what I thought that if I was getting a chance to get a degree through 6 months correspondence course through IDF, that's the International Diabetes Federation, I just took that opportunity, I attended the workshops, and then of course the guru is just right besides me, and the best of the guidance that I can ever get from anybody else, and that just has made me a good diabetes educator, I think. We have one son. Jiten, before I finish, we have one son, and he is a doctor. He's on his final year, so it's a lot of medicine even at the dinner table nowadays. Yeah. Great. अच्छा, आप ऐसे educator का क्या purpose होता normally when you are a diabetes educator? Can you elaborate? I'll tell you what happens that when a patient comes in, even after having 10 years of diabetes, they would not know what a normal HbA1c is. Only people without diabetes, they won't know. But even with diabetes, such an important test which is done every 6 monthly, and they have no idea about it. And what happens in diabetes, if it is explained to them initially, I think they will look after themselves. Whatever it is, otherwise they feel that if their blood sugars are fine, and they are fine, but it's not only about blood sugar. There are many other aspects related to diabetes. So the doctor cannot give them so much time to explain it to them that what happens actually inside your body. You cannot see what is happening inside, but you can explain it to them that it is really a dreadful disease and don't take it very lightly, because in the initial years, you're always feeling well in diabetes. Sometimes there are no symptoms in diabetes. So when they come in, they just need to have a little bit of explanation what happens and what care they need to take, and they just don't need to take it very literally that diabetes तो सबको होता है. It's a very commonest disease. क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है? So I think that liberty the patient should not be taking it. Excellent. Because they have very little time on their hands, and somebody needs to explain to them in their language and give them time also. Without giving them time, it's not going to happen. It's very difficult to explain it to them. Excellent. So आज हमारे पास जो टॉपिक है वो डायबिटीज यानी कि मिठास, वो मिठास की बीमारी है, और मिठास की बीमारी के लिए डॉक्टर्स हमेशा मीठे होते हैं. So we see both of them. We have very sweet doctors here. In fact, one is a doctor and one is an educator.
तो अब देखते हैं वो किसको पढ़ाएंगे, हमको ज्यादा पढ़ाएंगे कि डॉक्टर साहब को खुद को पढ़ाएंगे. Ladies and gentlemen, boys and girls, a warm welcome to Papa JC Talk Show. We are headed for one of the most important topics today, diabetes, the silent killer. They call it silent killer because there is definitely something about this silence and killing. We will go and decipher it. But before that, I must tell you that we are all lined up for the next 3-4 days. हालांकि हमारे पास जो आज की सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद we have lined ourselves up with speakers from outside Calcutta mostly, so that they can come and they can educate us on their subjects. So I'll just take you through, it takes me only 30 seconds more. First is tomorrow we have invited Sharmishta Mitra. She is a transpersonal psychologist and behavioral therapist, all the way from Dubai. Now she is going to tell us about mind games. It's a very interesting topic. It's all about the mind. We all know mind is everything. So let's understand how mind works on everything else. Day after, we have invited Dr. Preeti Ganatra. Now, we've had a very good session on Sujog therapy a few days ago by Namrata ji. Now, that therapy became such a hit that we have got a lot of requests to do it again, but we will cover different topics now. Sujog therapy is a very vast topic. We have covered one part, we'll cover the rest now. It also includes acupuncture and so many other things. So be prepared for day after tomorrow for Sujog therapy part 2. Okay, then we have on Saturday, menopause is not a taboo. So invited the nutritionist and wellness expert from Singapore, Miss Meenu Agarwal, to tell us how to deal, rather tell you or tell all of them how to deal with menopause. Don't worry, men also have menopause, so we'll all learn. Then we have finally one of the best sessions we're going to have is parenting part 2. Invited Mr. Narendra Goidani from Pune to talk about Ma and Pa and who does what to bring up their children. So it's going to be interesting. We have 4-5 sessions lined up. Samay hoga 6 baje ya 7 baje ya whatever time, depends on them. So please join our WhatsApp group to get your links and join on time. Kavita ji, may I now request you to introduce both our guests of honors for today? Yes, please. So good evening, everyone. We all know that we are lined up today's session with a great and interesting topic. And it's we already know that diabetes is related to something sweet. And generally a statement goes, diabetics are usually sweet. We all love sweets, but it's not a privilege for most of us to have it according to the way we want, since we are scared of it. So it's a pleasure on board to welcome Mrs. Faguni Pathak, who is a diabetic educator, and she is going to tell us about tips and guidelines how to go about it. And we also have with us Dr. Sanjay K. Shah on board, a diabetologist and an endocrinologist, MBBS, MD, MRCP UK, CCST. He has a certificate of completion of specialist training in diabetes and endocrinology in the UK for 5 years. He is head of Diabetic Center, NH Multi-Speciality Hospital, as well as a consultant endocrinologist. He has many feathers attached to his cap. He has been awarded the best resident in Dr. Mumbai and Boston, UK. He is actively involved in the teaching and training of paramedics, nurses, and doctors. He has been practicing this for last 30 years. He has also won a National Talent Scholar, Jay Wali Prize winner, Certificate of Honor for JBNSTS, and a number of other organizations to name few. Regular participant in seminars and workshops locally and internationally. He's also published few papers in national and international journals. So here we have with us to take us through a great session ahead. Over to Papa JC. Thank you, Kavita. Lovely introduction. I think you're working very well on introductions. You're doing a lot of additions. Okay, as we go, the session moves like this, that we will be talking to Dr. Saab about a few things on diabetes. In the meantime, you are always more than welcome to please raise your hands. If you want to directly ask your questions, you can ask on the chat. Kavita ji, you'll take care of the chat part. Make sure the questions are not repeated as usual.
if there are repetition of questions, you make sure that they are corrected and you produce only the single questions. And we'll start the topic now. Dr. Saab, are you there? Yes, I am. Hi. Can you hear me? Dr. Saab, yeah, I can hear you. Okay, good. अब डॉक्टर साहब डायबिटीज जो टॉपिक है जब हमने इसको मेंशन किया था, वी हैव गॉट 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स नाउ. 8 ग्रुप को हमने जब डाला डायबिटीज का टॉपिक, तो सबके अपने अपने क्वेश्चन बाहर निकल के आए थे. हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को डायबिटीज बहुत सालों से है और वो दवाई ले रहे रेगुलर, तो उसको कैसे कैसे कंट्रोल करना है, वो सही कौन सा है, गलत कौन सा है, दवाई चेंज करना चाहिए, जेनरिक मेडिसिन का चेंज करना चाहिए, या हम लोग को डायबिटीज का नजरिया कुछ गलत है जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायबिटीज जो हमारे देश में आई थी. पहले तो डायबिटीज नाम की कोई बीमारी होती थी हमको पता नहीं है, बट दिस इज अ वेस्टर्न डिजीज व्हिच हैज कम टू इंडिया. You think it is a culture of Western medicine to be introduced to India that they have tried to do? Well, see, diabetes तो हमारे यहाँ भी था, ऐसा नहीं है. But क्योंकि अगर आप, if you go back in time, maybe the first diabetes reported essentially is during Egyptian times. उसके बाद यहाँ Shrut ने भी about 2,500 years ago, he has also described diabetes. So diabetes has been there for many, many years. Now, the fact is that the epidemic, the speed at which it has progressed, lately, at least particularly in the last 30, 40 years, you can say it is partly because of westernization of our diet or culture. Basically, the fast food eating, the fact that we are not doing that much exercise, utni mehnat nahi kar rahe hain physically, so we are not basically burning those calories, and that is basically resulting in increasing obesity. हम लोग जरूरत से ज्यादा, हमारी जो हाइट है उस हिसाब से हमारा वजन काफी ज्यादा है. We are not doing enough exercise, so because of that, more and more people are getting diabetes. So that is essentially the way we look at it, that it is the westernization of our lifestyle has essentially resulted in diabetes. But this has always been there. But yes, the multiplication factor is that kind of lifestyle. आराम का जिंदगी, अच्छा खाना, because what has happened is हम लोग भूख लग रही है इसलिए नहीं खाना खा रहे हैं, हम लोग को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इसलिए खा रहे हैं. If you go today to say the multiplexes or the food courts of the malls, you are having a chance to eat Mexican, Italian, French, English, Indian, Rajasthani, Gujarati, North Indian. So all these varieties, it is fun to eat rather than eating because you need to eat. So that has shifted. So we are basically putting on more weight, consuming more calories. And then life has become easier these days. A lot of things are on remote control. You don't even have to get up to change the channels or to basically answer the phone. We are sitting there, basically couch potatoes, if you want to put it that way. It's a sort of American expression. And that is the reason why we are developing this disease in a fairly rapid rate in our country. Excellent. Dr. Saab, apne log ab chalenge. We have a series of questions to talk about, but sure. Normally it's a Q&A platform of ours where we ask questions for the answers which I have to take back to my group people. But I understand you wanted to share something on diabetes. So if you want to have a presentation, you are more than welcome, because I think the platform is more or less ready. बहुत लोग जुड़ नहीं पाएंगे because connection is a major issue. I can see that they are trying to join, but वो join हो नहीं रहा उनका somehow. So don't worry about that. They will see it on the Facebook. We have a Facebook link. We'll share it instantly so they can watch it. आपकी reach सही पहुंचेगी. बहुत लोग शायद join नहीं कर पाए, but आपका education सबके पास पहुंचेगा. So you want to start with the presentation, sir? Yes, I'll share my screen then. So let's hear from him what he has to say about diabetes as a subject. Can we have an interaction session? Yeah, afterwards. I mean, of course, if you want to ask questions in the middle of the slides, can they just put it on the chat, or they can even talk? Absolutely. अगर आपको कुछ पूछना है तो संग अपना hand raise कर दीजिए. Do not hesitate, please. Ours is a very open format, so please ask your questions if you have. Like to ask questions during the slideshow, Jiten. Yeah.
We have told them to ask questions if they have to. Sure. Please, you can explain. Can you see my screen? Yeah, it's okay, Yes, sir. we can see, sir. You can see, no? That's fine. Fine. So, thank you, Jiten. Thank you, Papa JC, for inviting us to this excellent forum. I'll just spend at least about 10 to 15 minutes from my side to lay the sort of stage for diabetes and how we should understand and treat it scientifically. After I finish my talk, I would encourage you to ask me questions, and I and my wife, who's a diabetes educator, will do our best to try and basically answer some of the questions that you are going to ask us. So this is mantra. Mantra is, I'm sure we all understand what it means. It is the magic of education. Okay, so mantra was the diabetes education program that I had created approximately 20 years ago when I came back from England. And it is essentially for basically educating people about diabetes and essentially understanding diabetes the way it is today and how we should take it forward. So, slide. So briefly, very simplistically speaking, if I ask a question to most people, what is diabetes? They start talking about numbers, okay? Blood sugar of more than 140, more than 200, fasting more than 125. But it actually touches everybody's lives, okay? And it affects people differently. So what I would like is for people to basically answer on the chat box, or whenever I complete my talk, to talk from their point of view of what diabetes is. Personally, over the last 20 years, while I have been working with lots of patients of diabetes, diabetes is different for different people. The science of it in the terms of numbers is always there on the background. But for somebody, it might be just the burning in his feet and unable to sleep at night. For somebody, it is getting up at night 2 or 3 times in the night. Okay, so his sleep is not complete, and during the day, he cannot perform well. For somebody, might be that he is losing weight and he's actually afraid that perhaps he has got cancer and he's about to die. But it perhaps is not that. It is just because his sugars are high. For somebody else, it might be just a bad heart attack at a young age, or it can be a stroke, or for somebody else, it might be ulcer in his foot, घाव हो जाता है पाँव में जो भर नहीं रहा है. So there are sort of very many aspects by which diabetes touches people's lives. And I think that is what is very important. So diabetes is a disease. So diabetes is a disease, okay? It affects several organs and also as a consequence affects the quality of life of people. While when your blood sugars are not very high, you may think, well, it is mild, I cannot feel anything about it, but it can be life-threatening if your blood sugar actually becomes very high, per se, okay? Sometimes your blood sugars, when you first time find out, it might be 500, 600 or 700, and it can be life-threatening. There are lots of patients which come to us in our clinic and they even ask, Falguni, can diabetes be cured? And the simple answer to that question is no, it cannot be cured, but yes, you can learn to live with diabetes, live a healthy and normal life once you understand about diabetes and take that forward. There are several types of diabetes, and I'm sure my patients have heard about basically diabetes being type 1 or type 2 diabetes, or what is called gestational diabetes, diabetes in pregnancy. Now, type 1 diabetes is patients where there is no insulin being produced by the patient's pancreas. That is quite uncommon. Perhaps 5% of people with diabetes have that kind of diabetes. But type 2 diabetes, which is the commonest variety of diabetes, usually at first with diabetes diet, exercise, things can be kept under control. Then you move on to tablets. And then if the tablets fail to work, you may have to take insulin. But the third one, which is mentioned here, gestational diabetes, is surely a very important aspect that we all should perhaps be aware of. Diabetes in pregnancy, because more and more women during pregnancy are getting diabetes.
And in this group of patients, you are treating two people, the pregnant mother as well as the baby, making sure that the baby is healthy at birth and that baby will have a completely normal life. There are other rare forms of diabetes, like patients taking steroids get diabetes per se, or patients who get other hormone disorders can get diabetes, but this is quite rare. So if not controlled, why do you need to control diabetes? If you're not controlled, diabetes can lead to severe complications. It affects the eyes, the kidneys, heart, brain, nerves, feet, liver. So many organs basically get affected because of basically diabetes per se. And that is the reason why we need to control diabetes. Now, if you take medical parlance, okay, doctors talking to doctors or doctors basically talking about diabetes, you may hear a term called macrovascular disease. Macrovascular disease means what? Macrovascular disease means blood arteries. Basically, diabetes में blood vessels, अब जहाँ खून दौड़ रहा है, बड़ी arteries जो है, वो शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉक हो जाता है. अगर आप फोटो देख पा रहे हैं तो ऊपर का जो है पाइपलाइन जो है आर्टरी का वो खुला हुआ है, खून आसानी के साथ दौड़ सकता है. And the picture down below, as you can see, it is being clogged with cholesterol and basically sugar. So diabetes में ये होता है. And because of this blocking and clogging of the arteries, heart attacks and brain strokes happen approximately 4 to 5 times those who do not have diabetes. So your risk is 4 or 5 times more. Now, diabetes not only affects big blood vessels, but it also affects small blood vessels. And the small blood vessels is how it affects the eye and the kidney. So, आप left hand side में जो देख रहे हैं फोटो, जो ऊपर का फोटो है वो रेटिना का फोटो है. अब अगर आप माइक्रोस्कोप से आंख के पीछे देखते हैं तो नॉर्मल रेटिना लुक्स लाइक दैट, नाइस एंड पिंक. एंड ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है लाल जो दिख रही है, दीज आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स. मगर जिसको डायबिटीज के कारण, डायबिटीज के लिए बेसिकली डैमेज होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो वो लीकी हो जाते हैं, लीक करने लगता है. जो येलो जो डॉट्स एंड डैशेस जो है, बेसिकली दिस इज शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब लीक हो रहा है. और जो लाल लाल है वो खून बह रहा है. तो कभी सुना होगा आपने जिसकी आंखों की दृष्टि कम हो जाती है कि खून भरा है आंखों में. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज. And we as diabetes specialists or eye doctors check at the back of your eye to see are the small blood vessels in diabetes affected or not. So that is the target. The same thing is happening basically also in the kidney. But kidney में हम देख नहीं सकते हैं, तो हम यूरिन टेस्ट करके देख पाते हैं कि ये जो बाईं ओर जो आप फोटो देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं. आंखों के पर्दे के पीछे हम देख पाते हैं, क्योंकि आंख में लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, जिससे आपको बाहर की दुनिया दिखती है. हम अगर आंख के अंदर में लाइट डालते हैं तो हम आपके आंख का पर्दा देख सकते हैं. Apart from that, you have what is called nerve damage from diabetes. So people that have nerve damage, neuropathy. So roughly 2/3 of patients get neuropathy. इसके कारण मसल वीकनेस हो जाता है, पाँव का शेप चेंज हो जाता है, पाँव की नसें झनझन करती हैं, नमनेस आ जाता है हाथों में और पाँव में. और बहुत नमनेस ज्यादा हो जाने से, पाँव में लग जाने से भी आपको महसूस नहीं होगा, कट जाता है, घाव हो जाता है. तो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन डायबिटिक न्यूरोपैथी इन द फुट. एंड देन ये जब घाव इन्फेक्टेड हो जाता है तो गैंग्रीन हो सकता है, पाँव की उंगलियां काटनी भी पड़ सकती है. तो ये समस्या है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. तो डायबिटीज में नर्व जब डैमेज हो जाता है ऐसा होता है. और पुरुषों में सेक्स का प्रॉब्लम होता है डायबिटीज के कारण, नर्व खराब हो जाने के कारण. So can diabetes complications be prevented? The fact of the matter is that yes, इसको आप रोक सकते हैं. किस तरह से रोक सकते हैं? How can we do that? We can do that essentially by doing a few things. It is not only about controlling blood sugar. Controlling blood sugar तो करना ही है. आप बड़े घर पे शुगर चेक कर सकते हैं, लैब पे शुगर चेक कर सकते हैं, मगर सिर्फ शुगर चेक करना से काम नहीं हो जाता है.
उसके साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर अगर वो है उसका इलाज करना है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो उसका भी इलाज करना है, क्योंकि मैंने आपको फोटो दिखाया है किस तरह कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरी पे जैम कर देता है। साथ में आपको स्मोकिंग या टोबैको यूज बंद करना है, क्योंकि उसके कारण भी आपकी आर्टरीज वगैरह क्लॉग हो सकती है। उसके बाद जो है कुछ कुछ नई नई दवाइयां आई हैं डायबिटीज में, है न्यू मेडिसिन which can stops the progression of damage to your particular organ like your heart or your kidney or your brain or your eyes. So there are particular medicines that are available which can stop the progression of damage, okay, from diabetes. और ये सब आप तभी रोक पाएंगे जब आप रेगुलर चेकअप कर पाएंगे। जितेंद्र साहब ने ऑलरेडी बताया है डायबिटीज साइलेंट किलर। डायबिटीज साइलेंट बीमारी है। जब आपका शुगर 200 हो जाता है आपको कुछ हो नहीं जाता है। कभी कभार आप कैंप में देखते हैं आपका शुगर 300 है, आपको विश्वास नहीं होता है, यू कैन नॉट बिलीव इट, बिकॉज बेसिकली इट इज अ साइलेंट डिजीज। समझ में नहीं आ रहा है, चेक करने से मालूम पड़ता है। जिस तरह से डायबिटीज साइलेंट डिजीज है, डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, द ऑर्गन्स विच गेट अफेक्टेड विद डायबिटीज, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस आर आल्सो साइलेंट। आंख के पीछे जो बेसिकली लीकेज हो रहा है आपको नहीं दिखेगा, डॉक्टर देख सकता है। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है, शायद आपको छाती में दर्द ना हो, मगर उसके पहले शायद कार्डियोग्राम या इकोकार्डियोग्राम में मालूम पड़ सकता है। किडनी में जो डैमेज हो रहा है वो शायद आपको महसूस नहीं हो रहा हो, मगर आप किडनी यूरिन टेस्ट करेंगे तब मालूम पड़ता है। तो रेगुलर चेकअप रहने से मालूम पड़ता है कि ये डैमेज होना चालू हो रहा है, तो उसके लिए आप नई दवाइयां को इस हिसाब से इलाज करके आप रोक सकते हैं। So diabetes is more than just sugar. We need to basically protect your organs. आपके अंग सही सलामत रहें। ये और एक प्रश्न है जो फाल्गुनी को बहुत बार पूछा जाता है डायबिटीज के बारे में, कि शुगर कंट्रोल कितना रखना चाहिए। सो जो प्रेग्नेंट नहीं है उनका शुगर रहना चाहिए खाना खाने के पहले या खाली पेट 70 और 120 के बीच, और जिनका खाना खाने के बाद 160 के नीचे। अगर आप उतना शुगर रख सकते हैं तो साधारणतः डायबिटीज के कारण आपके अंग या ऑर्गन डैमेज नहीं होते। मगर जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहता है। वैसे शुगर का भी ऐसे ही है, थोड़ा बहुत शुगर बढ़ता है, कम होता है। आम का सीजन है, फिर बढ़ेगा, कुछ लोग आम खाएंगे, फिर कम हो जाएगा, खाली पेट चेक करवाते हैं तो कम रहता है। तो शुगर ऊपर नीचे ऐसे आते रहता है। तो कैसे मालूम पड़े डॉक्टर साहब को कि आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है? खाली पेट शुगर फास्टिंग और पीपी आप चेक करवा सकते हैं, मगर वो तो उसी समय उसी क्षण एट दैट टाइम ओनली आपका शुगर कितना है मालूम पड़ता है। और एक टेस्ट है हेमोग्लोबिन A1C। ओके, हेमोग्लोबिन A1C जो लास्ट 3 महीने का जो आपका एवरेज शुगर है, क्योंकि खून में जो शुगर है आपके हेमोग्लोबिन खून में जो लाल कण है या रेड ब्लड सेल्स है उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसका लाइफ स्पैन जो है खून में 3 महीने का है। तो हेमोग्लोबिन A1C आपको लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। वो बताता है कि आपका शुगर एवरेज में ज्यादा रहता था कि नहीं। तो ये एक टेस्ट है, वो डायबिटीज पेशेंट्स को करवाने से मालूम पड़ता है कि आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं। सो डायबिटीज क्लिनिक जब आप अटेंड करते हैं तो डायबिटीज समझना है, आपके अंग सही सलामत है समझना है, क्या खाना पीना है समझना है, एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज करना है वो समझना है, आपकी पाँव चेक, आपका हार्ट चेकअप, आपकी आंखें चेकअप, आपका किडनी चेकअप करना है। तो ये बेसिकली जैसे गाड़ी का चेकअप होता है जब गाड़ी गैराज में जाती है, आपका ऑयल फिल्टर, आपका एयर फिल्टर, आपकी बैटरी टेस्ट वगैरह होता है, वैसे ही डायबिटीज में सिर्फ शुगर नहीं देखते हैं, बाकी का चीज भी आपको जानना जरूरी है, और कितना आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, क्या बदलाव लाना है वो भी आपको सीखना है। यही मुझे कहना है डायबिटीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत जरूरी था जी। डॉक्टर साहब आपने तो आधे सवालों के जवाब ऐसे ही दे दिए एक प्रेजेंटेशन से ही। आपका स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं वही कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयर। Excellent. So
we've heard a lot about this presentation. Pehle, actually, normally in our formats, we do not encourage presentations, but today's presentation was very, very required. It was a must. And we actually learned so much more about diabetes and why it is called a silent killer. Now, डॉक्टर साहब कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं लोगों के जो ऑलरेडी लाइन अप होना शुरू हो रहे हैं. इन द मीन टाइम अगर आपको कुछ पूछना है डायरेक्ट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. यू आर हियर. You won't believe that almost we could not admit almost 70-80 people who wanted to join, but उनका join हो नहीं रहा है for the reasons thanks to our internet connection. और बाहर बहुत तूफान हो रही है. बाहर somehow तूफान है they were काफी. having issue. बहुत जोर तूफान हो रहा है. तो I have तो Another mild cyclone on the way. अरे भाई कुछ दिन पहले सेम तूफान आया था जब अपने हरियाणा हरिकेन आए थे, कपिल देव जी आए थे, तो सेम सिचुएशन था यहाँ पर. So right now we are having a lot of questions. So I am starting with the questions. In the meantime, if you want to ask directly, please do not hesitate. आप हाथ खड़ा करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे बिकॉज आपकी क्वेश्चन का ही जवाब देने के लिए इनको बुलाया गया है. और चैट पे अगर पूछना है तो चैट पे पूछिए. आवर क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ. डायबिटीज 2 जो आप बता रहे थे इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डायबिटीज. ट्रू, फॉल्स, यस, नो? See, Jiten, this is the question that many people, they have a myth, because diabetes, as education said, that there are many forms of types of diabetes, diabetes 1, type 1 and type 2. Because this myth has come because type 1 is basically insulin dependent. So type 1 में insulin एकदम absent होता है, and people who are going through this, they have to take insulin injections. And in type 2, you are just on oral medication. Just tablets later, you can control your blood sugar. So what happens? People think that's a milder version, but it is not like that. If your blood sugars are 200, the risks arising of your heart or kidneys or anything is still the same from type 1 or type 2 diabetes. So I think people have to understand that there is nothing said ever in medical textbooks or anything that there is something called mild diabetes. It is just a notion created by people. So either आपको diabetes है या नहीं है. And there is also one myth about borderline diabetes. There is nothing like borderline diabetes. Either you are a diabetic or either you are not a diabetic. We don't say that आपको borderline है. हम लोग कभी ये बताते नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा शुगर होता है उनको लगता है चला जाएगा, but वो चला नहीं जाता है. It's just that they feel that by doing a lot of exercise and by controlling their diet, they can maybe, stay at that sugar level, that HbA1c, but for a few months, but after 1 year, they come with really bad results. So I think there's nothing like mild diabetes. डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि हमारा जो फॉर्मेट में इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर देखिए अगर आप क्योंकि इस फॉर्मेट में आए हैं एज अ स्पीकर, हम अज्यूम करके चलते हैं दैट यू आर द बेस्ट. तो साइंस हमको जान के फायदा नहीं. आप स्ट्रेट अवे आंसर इतना इजी कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस के आंसर मिल सके. जरूर. आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट. अपने लोग थोड़ा छोटा करते हैं आंसर्स को, तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज people with diabetes cannot have sweets and should eat diabetic food. This is something that I keep hearing. What do you say on that? I think the simple answer to that question is that you can have sweets as long as your sugars are well controlled. There are ways and means by which you can consume sweets. Don't consume sweets on empty stomach because your sugar will spike. तुरंत ऊपर चला जाएगा. If you do want to consume it, have it with a meal. जैसे दाल भात रोटी सब्जी, साथ में एक आम का टुकड़ा ले लिया तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एक साथ डाइजेस्ट होगा. So that is the norm. पहले we used to completely strictly avoid sweets, but as time has gone by and we have got much better medicines, I think we can now allow people the liberty to enjoy life also. But that doesn't mean you can take excesses of foods and sweets and fruits which are very sweet, but yes, you can take liberties at times. Okay. हमारे पास कुछ अच्छे स्पीकर्स आए थे recently. They are food experts, nutritionists. उनका कहना है that these lifestyle diseases can be reversed. But आपने अपने presentation में बताया कि they cannot be reversed. No, why is this contradiction? Yeah, see, the thing is that in terms of, this is a reality check. In terms of theory, yes, it can be reversed. If I say technically, if I am technically 90 kilograms in weight
I manage to lower my body weight to 80 kilograms, it will be reversed. But it is like telling people, 100 people to stop smoking. 95 people will not be able to do so. So for all practical purposes, people cannot do so. And diabetes is a progressive disease. आप भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, पहले कुछ महीने डाइट और एक्सरसाइज से काम चलता है, फिर 1-2 साल चला जाता है, फिर टैबलेट आधी गोली से चलता है, फिर और 1-2 साल चला जाता है, फिर 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली लेना पड़ता है, फिर 5, 7, 10 साल जाने के बाद अभी डॉक्टर साहब बोलते हैं इंसुलिन लगेगा, और पेशेंट लोग फिर डॉक्टर चेंज कर देते हैं, ये सुन के ही डॉक्टर चेंज कर लेते हैं. So diabetes essentially, in short, is a progressive disease. So yes, reversal can happen early on, but it will happen for less than 5% of people. For 95%, वही पकड़ के चलते हैं कि 90% people it is not going to happen. Okay, that means you are trying to say that अपने लोग को मान के चलना चाहिए that this disease is going to go with us. Yes, it is going to be with us. How best to control it? Okay, we have to regulate our lifestyle to have the parameters under check. As Falguni mentioned, क्या होता है कि आप धोखे पे रह जाते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, सब ठीक है, फिर 1 साल 2 साल के बाद चेक करवाते हैं तो हाई हो जाता है कि 300 हो गया. Basically what has happened is because it is a silent disease, आपने ख्याल नहीं किया, आपने लगा कि अब से तो मैं मिठाई भी बंद कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, कंट्रोल में ही रहेगा, आप चेक ही नहीं करवाते हैं. तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. यू मस्ट गेट इट चेक टू सी जो आप कर रहे हैं. जैसे हम लोग चखते हैं खाना पकाते वक्त, मसाला डाल के चखते हैं, सेम थिंग. आप एक्सरसाइज डाइट कर रहे हैं, आप टेस्ट कीजिए, देखिए सचमुच में कंट्रोल में आया है. बाय टेस्ट यू मीन जो उंगली में घुसा के टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट जो रोज करते रहते हैं घर पे? लैब में जा सकते हैं. आपको उंगली में, अगर आप 2-3 महीने में एक बार करेंगे तो आप उंगली में क्यों घुसाएंगे, आप लैब में करवा लेंगे. अगर आप दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज का और आपको रेगुलर चेक करना है, हफ्ते में 1-2 बार करवाना है, तब फिर आप लैब में नहीं करते हैं, घर पे कर लेते हैं. ओके, मतलब टेस्ट का मतलब सिर्फ वही अपना ब्लड टेस्ट जो करते हैं उसी को टेस्ट करना है आपने, राइट? हाँ, उसको करना है. ओके, हाँ जी, उसी को. अगर समझ लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है रेगुलर एज अ बिजनेसमैन, हालांकि अब तो नहीं कर रहा है, बट ऑन अ नॉर्मल कोर्स, अ डायबिटिक पेशेंट व्हेन ही इज ट्रैवलिंग, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ही मस्ट टेक? देखिए, बेसिकली ऑल डिपेंड्स अपॉन आर यू टाइम ट्रैवलिंग और नॉट एज वेल. बिकॉज अगर आप खुद के देश में ही खाली ट्रैवल कर रहे हैं तो perhaps it is not very difficult. कुछ घंटों में, 2-1 घंटे में ही आप कहीं और पहुंच जाएंगे. So you have to, if you are taking insulin, it becomes an issue because of the fact that you are going to travel with the insulin with you. और इंसुलिन को ठंडा रखना जरूरी है. So आपको फ्लास्क में ले जाना पड़ेगा ठंडा रखने के लिए. हमारे देश में आप जहां जाएंगे वहीं शायद आपको नया इंसुलिन भी मिल जाएगा. So it may not be a major issue. But traveling with your glucometer to check your blood sugars, traveling with your insulin pens, वो बहुत जरूरी है. So that you can continue to take the medicines. जहां आप रहेंगे, अगर महीना 2 महीना रहना है तो 2 महीना का दवाई भी लेना है, क्योंकि उसी नाम से शायद वहां दवाई ना मिले, कोई और नाम से मिलेगा, फिर बदल जाएगा. तो क्वालिटी अगर बदल जाने से उसका इफेक्ट भी कभी कभार बदल जाता है. सो दैट इज अनदर इश्यू दैट यू हैव टू ट्रैवल विद. इस बार तो लॉकडाउन में ऐसा हो गया, लोग 2-2, 3-3 महीने ऐसे एक जगह पे रुक गए हैं. सो इट हैज बिकम अ चैलेंज. I know nobody can plan for 2 months, but if you are going on a holiday for 1 week, don't take only medicines for 1 week. Take medicines for 10 or 15 days. जरूरत पड़ी तो 1-2 दिन या 3 दिन के लिए आप लेना पड़ेगा. Now if you are traveling in time in terms of international travel करेंगे तो क्या है कि because of the change in timing clocks, आपका ब्रेकफास्ट टाइम चेंज हो जाएगा, लंच टाइम चेंज हो जाएगा. तो आपको जस्ट, अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो बेसिकली आपको इंसुलिन खाने के पहले लेना है, और वो देखना है कि जो एक इंसुलिन अगर 8 या 10 घंटे काम करता है तो उस गैप में लेना है कि आपको 8-10 घंटे हो गया है खाने के बाद, उसके बाद जब खाना खाए तब लेना है, मगर वहां का टाइम शायद अलग हो. सो दैट यू हैव टू एडजस्ट योर टाइम ऑल्सो. एंड आपको दवाइयां डेफिनेटली इस देश में, हमारे देश में तो आपको उसी नाम से शायद मिल भी जाए खोजने से दवाई, मगर आप विदेश में जाएंगे तो आपको इंडिया के नाम की एक भी दवाई नहीं मिलेगी. तो आपको जरूरी है, और वहां का डॉक्टर दिखाना तो आपको शायद डॉलर में या पाउंड में दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को. तो उससे अच्छा है आप दवाई लेके जाएं साथ में, और 1-8 महीना का एक्स्ट्रा ही ले जाएं. Because I have some patients who go to meet their children in the United States, and then I always tell them and recommend them to take medicines for a good few months along with them.
and to travel with them with the glucometer. कुछ देश में ऐसा होता है ग्लूकोमीटर का रीडिंग भी अलग आता है, कहीं कहीं मिलीमोल्स में आता है, जैसे बांग्लादेश में है 7, 8, 9 दिखाता है, वही हमारे देश में वो 150, 200, 250 दिखाता है. Okay, we have a question coming up from Sapna ji. Sapna ji, I'm unmuting you. Please be prepared. Unmute कर दो भाई. Ravi, are you there? Yeah. Please unmute her, Sapna ji को. यहाँ से unmute हो नहीं रहा है. Okay. In the meantime, Kavita ji, are you ready with some questions? Yes, I'm ready. Yeah, please ask. Okay, the first question goes like, if mother has diabetes, then her kids should cut down on sugar to avoid diabetes. That's a very nice question, Kavita. The thing is that diabetes type 2 variety, which is the most commonest one, runs in families. Okay, it runs in families. Because of one, it is partly genetic, but it's not only one genes, multiple genes. And two, it is the same environment. घर पे सभी लोग एक ही चीज खाना खाते हैं. What mother or father eats, children are also eating the same kind of food. Okay, so it is a combination of the both. So if the mother has diabetes and if the father has diabetes, then the risk of the child having diabetes becomes much higher. Okay? So they have to check that they have diabetes or not fairly early in their life. Say by the time they are age 25, 30, they should check their blood sugars. At the age of 25 or 30, most people don't think that they will fall ill. आप बीमार हो जाएंगे ऐसे सोचते ही नहीं, क्योंकि you're in the peak of your biological life. You're young, you can basically conquer the world, that's how you feel. So it is very unlikely that you will feel that you may have disease. But at that age, you may have to check if you have got diabetes or not. Okay, so how do you avoid getting diabetes? Remember, it is all about calorie balance. So don't get fat, okay? Do not put on weight. Do not put on weight. So eat healthy, do regular exercise. That is the best way you can avoid getting diabetes. But after doing all that, you get diabetes. It doesn't mean you have failed. It is just the disease. That is just luck. That has happened to you. If it has happened to you, there is medicines available today which can look after you for the rest of your life. Rest of your life means you can live till the age of 80 or 90 without getting any major problems. Excellent. Sapna ji, you are unmuted. Please ask a question. Yes, good evening, doctor. You answered my question. My question was same as Kavita. My father had diabetes. So even I'm always worried about it. Now I'm 54. So you already told me what precautions I should take. But the thing is, in what interval I should get my sugar tested? See, if you do not have diabetes and you are more than 50 years of age, routinely as a health checkup, you should check it once a year. Okay. Okay, so that because you are more than 50 years of age, okay, so once a year. If you are, say, if an other patient is maybe say in his 30s or 40s, then perhaps once in 2 or 3 years you can basically check. So right. At your age, perhaps an annual health checkup is important, and you should basically check it once a year. Okay, thank you. Okay, Dr. Saab, ऐसा है कि हमारे पास जो community है of my friends or people, listeners, there are different types of people connected. अब इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खुद को डायबिटीज नहीं है, उनके जेनेटिकली या फिर उनके हेरिडिटरी डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं था, तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि उनके बच्चों को डायबिटीज कभी नहीं होगा? और अगर होगा तो कोई उनका हिंट मिल सकता है, कोई सिम्टम्स जिससे कि उनको समझ में आए कि that this child out of 2 may have diabetes problem? Okay. So we have talked about type 2 diabetes, which happens in adults people. Now in children, when they get diabetes, usually it is type 1 diabetes. Type 1 मतलब क्या? जो फाल्गुनी ने बताया, इंसुलिन एब्सेंट है, इंसुलिन पैनक्रियास से तैयार नहीं हो रहा है. तो यूजुअली जब ऐसा होता है, when that happens, basically the child goes to the bathroom frequently. Okay, he feels thirsty, he feels hungry, so he wants to eat and drink basically frequently as well. रात को भी पेशाब करने को लिए उठना पड़ता है. Now in children generally रात को उठना नहीं पड़ता है, so you don't have to basically get up to pass urine. But if it is happening in children, that means again it is a possibility. If they have lost weight, again children generally put on weight as time goes by, year after year.
So if they are starting to lose weight, again, that is also an indication that they may have developed diabetes. तो sugar check करता है. But जिस तरह से मैंने बोला है, पहले हम लोग सोचते थे कि डायबिटीज टाइप 1 यूजुअली बच्चों को होता है. आजकल टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों को हो रहा है. तो उसको आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उनको टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है? Definitely in those children, they generally are overweight, obese हैं. Basically because of the fast food, the Americanization of our lifestyle is basically responsible for it. Another hint essentially is, जब अगर आप देखेंगे your children, their neck, nape of the neck, ये चमड़ी में ये काला काला दाग हो जाता है. Even in your armpits, basically there is a darkening of the skin. So that is what is called medical terms में acanthosis nigricans. But that is essentially the skin becomes leathery as well. That is essentially a marker that आपको insulin resistance हो रहा है और आगे चल के diabetes होगा. So this is very important. This is particularly important, say in girls, because इन लोगों को polycystic ovarian disease होता है. Or then getting basically pregnant becomes a challenge as well. And these also women, if they do get pregnant, then diabetes in pregnancy also happens more common. So that also becomes a challenge to the mother as well as to the developing baby. So this is some of the things that you can look for in your child if they are getting diabetes or not. Okay, now you defined, you mentioned about child. आपके हिसाब से वो child का age क्या होगा? The child basically, if you look less, type 2 में जो gap है, usually in their teens, say less than 16, 15 years of age. So that's a child. You suggest that the children today must get their bloods tested at from what age they should start testing? क्योंकि ऐसे तो symptoms बहुत जल्दी पकड़ में आते नहीं हैं. So to know that a child may have diabetes, even if it is not genetic, is there any test to test them at that age? So at that age, only you will test if your child has symptoms. You don't go out hunting for diabetes because diabetes is not so common in those children. Okay, so it is not so common. If they have these symptoms, you go for it. Or if your family, like both father and mother have diabetes, and you are worried if your child has diabetes or not, your pediatrician is basically checking him for vaccines and for other illnesses. Routinely, you can get the blood sugar check. But if the child has no symptoms, अगर उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो there is no reason to basically check his blood sugar. Okay. You don't need to check. But if he is overweight and if he has darkening of skin, then it is something that you need to be aware and perhaps check his sugar. And if it is a girl child, then also there is a risk of a different kind of disease called polycystic ovary. Okay. सर एक हमारा प्रश्न है जो बहुत ही relevant है. Actually मेरा experience के हिसाब से है. My sugar levels are normal. Sure. I look 72, but I am actually 52. So my sugar levels are normal. So I never had a sugar issue, but my father was diabetic. Sure. I lost my father because he was diabetic and he had a heart attack, so we could not get that pain feeling. So that was the problem. Sure. So now at this age, can I have the risk of getting diabetes? Yes. Diabetes can happen at any age. Okay, it can start from anywhere. Yeah, it can start from anywhere. So if you are at present 52 and don't have diabetes, that doesn't mean that when you become 62, you may not have diabetes. You can still get diabetes. You can get diabetes at the age of 70 also, 75 also. ऐसा है कि as time goes by, as we age, remember, if you look at it, life expectancy of a human being has increased over the last 20-25 years. If you look at 1947, you have LIC ka records hai, the average Indian age was approximately 45 or 47. So in the last 50 years, it has become 67. So we have aged. So our pancreas is also aging, our brain is aging, our eyes are aging, our kidneys are aging. So an aged pancreas may not be able to produce as much insulin when it is 70 years of age. It may do so at the age of 50, but may not be able to do so at the age of 70. So you may develop diabetes at that age. So even if someone is not genetically diabetic conscious or genetically उसको हो सकता है या उसके parents को नहीं था कभी, तो उसको भी हो सकता है. हाँ जी जरूर, definitely. Because you didn't know. Nobody is safe. हर कोई उस chapter में आ जाता है. You're right. You see, you have to follow statistics. It is said roughly about
10% of the adult population has diabetes. 10%, Okay. 1 in 10. So there is a 1 in 10 chance of any of us to get diabetes, honestly speaking. Good. Kavita ji, aapka question, next question, please, before I move on to my questions. Certain medicines are to be taken half an hour before meals, whereas some after meals. So what is the significance of this? Again, it's a very nice practical question, and it becomes a challenge for people to, when they are prescribed more than 3, 4 or 5 medicines per day. Now, technically speaking, certain medicines basically stimulate the insulin production. आपका pancreas से, वो दवाइयाँ खाना खाने के पहले लेनी, ठीक है? Certain medicines basically make the insulin that you are produced work better, तो उसको खाना खाने के बाद लेना है. Then that medicine works best. अगर आप गोली नहीं लेंगे, then it will not work at all. अगर आप गोली ले लेंगे, सही टाइम पे लेंगे, तो it will work 100%. अगर आप wrong time में लेंगे, maybe it will work 90%. So taking the medicine is important. Okay, taking the medicine the right time is more important. और कुछ नहीं. मगर don't skip your medicines. That is the whole thing. But it is more particularly important for insulin injections, because insulin injection तो is immediately उसका action हो जाता है. So certain insulins are very fast acting. तो खाना खाने के तुरंत पहले लेना पड़ता है. कुछ insulins बहुत आस्ते आस्ते काम करता है, तो उसको आपको आधा घंटा पहले लेना पड़ता है. और कभी कभी कुछ इंसुलिन, नया जो इंसुलिन आया है उसका बहुत फ्लैट प्रोफाइल है, मतलब उसमें स्पाइक नहीं होता है इंसुलिन का खून में, तो उसको आप कोई भी टाइम में ले सकते हैं. आप रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं, सोने मैंने खाना खाने के बाद सोते वक्त भी आप ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फ्लैट इंसुलिन. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल that you are using as medicine. That decides as to when you have to take the medicine, and that basically your doctor decides so that it gives you the best effect to your body. Okay. Next question, Kavita ji. Yeah, I would like to know how to get rid of the numbness of hands and feet due to diabetes. Okay. जैसे मैंने बताया था मेरे टॉक में भी कि डायबिटीज से नर्व खराब हो जाती है तो नम्बनेस हो जाता है. तो ये जो नम्बनेस है नर्व डैमेज के कारण है. तो नर्व डैमेज तो शुगर ज्यादा रहता है उसकी वजह से होता है, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहने से उसकी वजह से होता है, जो लोग स्मोक करते हैं उसकी वजह से भी होता है. तो ये सब चीज का ख्याल रखना है. तो इफ यू कंट्रोल योर ब्लड शुगर्स बेटर, ब्लड शुगर बेटर मतलब क्या, खाली पेट जब आपका ब्लड शुगर बिटवीन 70 and 120, पीपी शुगर लेस देन 160 अगर आप रख पाते हैं, और हेमोग्लोबिन A1C लेस देन 7%, then this numbness, your nerve damage will be reduced or stopped. मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि basically it has gone beyond repair, the damage is beyond repair, then you have to basically help your nerves by other medicines. वैसी medicines मिलती हैं, certain nerve vitamins are available in the market which you can take and see if it helps or not. So good control of diabetes is important. Then nerve specific medicines you can take to help. Like sometimes vitamin B12 basically helps, certain other vitamin B complexes help. So there are certain like Benfomet tablets to help. So these type of medicines basically help. But in some patients, kuch patient mein, damage is so advanced that these medicines also don't work. So the whole idea is आप अच्छी तरह से डायबिटीज कंट्रोल करके नए नर्व्स खराब ना हो जाए, जो हो गए हैं उसको हम कुछ और दवाई देके उसको हम ठंडा कर सकते हैं. अगर दर्द होता है उसको कम कर सकते हैं, और नम्बनेस है थोड़ा बहुत कम हो सकता है. Manoj, you have a question, Manoj? Manoj Pasari ji? You had a question? Yes, sir. Thank you. Thanks, JC. Hello, Dr. Saab. Hello. Dr. Saab, I am 50. I am Okay. otherwise very fit and I'm into heavy exercising, heavy walks and exercising, gymming also. My mom is a diabetic, Sure. but my dad is not. And I'm genetically, I am more, or rather I would say I am almost 95% of my dad and not mom. Okay. Mhm. How prone am I to diabetes and what are the additional precautions which I should take in this kind of a See, situation? at your age, if you have still not developed diabetes and you are an Indian, already you are lucky, because 1 in 10 Indians would have got diabetes. So you are in the 9 out of the 10. Okay.
But as I have mentioned earlier, as you age and your pancreas ages, it may be that you may get diabetes per se. So it is not that you will not get it. Okay, it's not that you will not get it. At your age, you have to get yourself health checkup once a year, and perhaps that's what you should do. Okay, you don't need to panic. Okay, you don't need to dramatically change your basically diet, worrying about diabetes per se. You need to lead a healthy life. You are, from what I have here, you are leading a more than a healthy life. Not a lot of people do as much exercise perhaps as you do, which is good. Okay, that is good. That will perhaps prevent at least your risk of developing diabetes per se. And again, if you are avoiding fast foods, very high calorie foods, again, that itself will also to your advantage. So the risk is less, but it is always there, because as you age and you live longer, you are more likely to get it because you're going to live longer. Sir, I had another similar part of this question was genetically, I am more of my dad and not my mom. And only my mom have diabetes, my dad doesn't have. So does it makes a difference to me, since genetically I am my dad, not mom? Well, not really in that fashion, because you see, some of the diabetes genes passed on through the mitochondria, and you originally developed from one cell. And the mitochondria aspect of it only comes from your mother. It doesn't come from your father. Okay. So it is still possible that you can develop diabetes. It is said that roughly, if one of your parents has got diabetes, perhaps you've got a 3% extra chance of diabetes. If both parents have diabetes, you have an additional 6% extra chance of having diabetes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Manoj. In fact, Dr. Saab, ये थोड़ा देर से आए थे आज, वरना he is a part of our entire organizing. तो इनसे आपको पूछते रहना पड़ता है कि बॉस कहीं कुछ रह गया क्या? Okay, we go to the topic. Next question we have one Zainab ji. Zainab ji, unmuting you. Ravi has to unmute हो नहीं रहा, कर देंगे please? Yeah. Hold on. Okay. Hello, sir. Unmuted. Hello. Hi. So I am 55 years old and I have diabetes, and my fasting is 171 and PP is 256. So what should I do to have the precaution? Okay, so clearly आपका sugar control में नहीं है, because what it should be, perhaps you are also aware of it. It should be anywhere between 70 and 120 fasting or before meals, and your PP should be less than 160 or 170. In fact, your fasting is a 160, 170. So you already starting off your day at a level which is high, and then throughout the day your blood sugar is high. So that is going to produce damage to your basically organs, as we have mentioned in my talk. Okay, your heart, kidney, eyes, थोड़ा damage हो जाएगा. आपको sugar अवश्य कम करना जरूरी है. तो जो आप दवाइयाँ ले रही हैं, I am not aware of what medicines you are taking, but you definitely should I inform you? You can, but you can definitely either increase the dose of medication, or you have to change the medication that you are using, depending upon which organs in your body are at all affected or not. आपको diabetes कितने साल हो गए? Diabetes मतलब 6 महीने. मतलब I got to know in 6 months. Got to know 6 months. So it's not a very long duration of diabetes for all practical purposes, or not very long duration. Diabetes में जो है, आँखें हैं, किडनी है, ये सब जो बीमारियां हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल की बीमारियां हैं, वो 5 साल 10 साल लग जाता है. बाकी आपको जो बिग मैक्रोवास्कुलर डिजीज जो मैं बता रहा था, हार्ट और ब्रेन जो है, वो 6 महीने साल भर में भी आपको ये तकलीफ दे सकता है. तो आपको बेसिकली शुगर के अलावा आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, और ये सब चीज का कंट्रोल करना है. और जो आप दवाई ले रही हैं, शायद उस चीज का डोज थोड़ा बढ़ाना है, या अगर आपका खाने पीने का या एक्सरसाइज उस हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ टाइम निकाल के आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है. सो द ट्राइपॉड, द 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डायबिटीज केयर, डाइट, एक्सरसाइज, आप जितना कर सकती हैं आप कर रही हैं, उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपको दवाई का सहारा लेना है. और अगर दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो डोज शायद बढ़ाना है या दवाइयां बदलनी है, क्योंकि उस दवाई से आपका जो होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है. Excellent. What type of
exercise I have to Madam. follow? What type of exercise? Now, see, the thing is that how old are you now? 55. So 55. So it all depends upon what you are used to. Now, for an average middle-aged, I am also middle-aged, so sorry for saying middle-aged, but middle-aged, basically the kind of exercise that we do is essentially walks, or perhaps maybe using a static cycle or a treadmill. So that is the kind, unless you are, if you play games like say badminton or some other kind of game, if you can play, which can produce some form of exercise, this is a reasonable exercise to do. For some people, they do jogging, they do running. I do not basically advise that, because what happens is that maybe your sugar will be under control, but maybe within a month or two, you may have to go and see an orthopedic doctor, because now your legs hurt, or you have fallen down and perhaps have basically hurt your leg or your back. Okay, so I basically recommend, depending on the age of the person, perhaps mild form of walking is perhaps a reasonably good exercise. Up to 35 to 40 minutes a day, at least 5 to 6 days a week. Okay, thank you, sir. Thank you, Zainab ji. Thank you so much. Thank you. अब लोग डॉक्टर साहब, अब जो कुछ आंसर्स आपसे मांग रहे हैं, आप उनको एक या दो वर्ड में देंगे, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे आंसर. चलिए फटाफट करते हैं, रैपिड फायर. बाकी मोस्टली आपके आंसर जितने भी है जेनरिक ही है. आपको वैसे मैंने बोला, रवि, इनको आपने स्विगी में कॉफी भिजवाया कि नहीं? अब सोचे आपको पानी वाली ऑफर नहीं करके सीधा स्विगी से कॉफी भिजवा देते हैं. It has stuck in the storm. अच्छा, it is stuck in the storm. Okay. फ्री में मिलेगा. अच्छा सर, एक क्वेश्चन ऐसा, I am a diabetic since 21 years. I am on medication. I take 2 tablets of Glycomet, 1 gram, Glucobate 25, and Dimicrone XR60. So do you think I should switch to insulin? Till now, I have no other side effects other than hair fall. I have chia seeds and methi dana both soaked first thing in the morning. I am 53 years old. Okay, thank you very much for asking that question. If your sugar is well controlled and you have no complications, as you say, and with these medicines, your sugar is well controlled, I think you don't need to change any of your medicines. You continue with whatever you are doing, but please get yourself regularly checked. Not only your sugar, but perhaps once a year your cholesterol. Make sure you have your blood pressure checked, your eyes checked, get an ECG done, because basically the aim of treating diabetes is beyond blood sugar control. Sugar तो control रखना ही है जो आप कर रहे हैं, मगर आपके बाकी के अंग सही सलामत है कि नहीं है, वो भी साल में एक बार चेक करवा लीजिए. Should we start medication when we have diabetes in borderline, that is 100, or try to control what is better? Now again, you said there is nothing called borderline. Yeah, see, the fact है, basic understanding ये है, there is nothing like borderline. Either आपको diabetes है या नहीं है. जो अगर आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज का इलाज जो हम लोग करते हैं, वो आपको ड्यूरिंग माय टॉक हैव सेड इट अगेन एंड अगेन, प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स. तो बेसिकली आपके अंग खराब नहीं हो रहे हैं, वो देखना जरूरी है. उसका भी इलाज साइमल्टेनियसली करना है, एक साथ भी करना है. मगर अगर आपका शुगर सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाता है, तो आप कर सकते हैं. भूल लोग कहाँ करते हैं? लोग डाइट और एक्सरसाइज करते हैं, 1 महीने के बाद शुगर चेक करते हैं, कंट्रोल में है, उसके बाद क्या है कि 6 महीना साल भर तक भूल जाते हैं. आप रेगुलर चेक करते रहिए कि जो आप कर रहे हैं उससे शुगर कंट्रोल में है. Excellent. अच्छा, what are the age related blood sugar levels for diabetes? You already mentioned, कुछ फर्क भी होता है क्या? आपने जो बताया, जैसे ब्लड प्रेशर में है वैसे शुगर में नहीं है. शुगर आपका उतना ही रहना चाहिए, whatever your age. Next, what are the best diet for diabetes patient from morning to night? What do you want to say something on that? It's about the diet, and there are no special diets for diabetes. As far as you can just eat, any normal person, what he eats, the same thing the diabetes person can eat. And sometimes, those diabetic foods can sometimes even raise your blood sugar levels. So I think it is very important to know that there shouldn't be any separate meals being prepared for the diabetic patient. As long as you avoid very sweet foods. So a healthy diet is what is required. Dal, bhat, roti, sabji khaiye. That is no problem. You don't need to eat any special foods. We don't recommend to our patients to eat special foods. कोई स्पेशल मंत्र नहीं है फूड पर अपने डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, बिकॉज़ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आर सफरिंग विद डायबिटीज. तो कोई स्पेशल मंत्र हो तो बताइए, बट उनका कंट्रोल नहीं हो रहा. हाँ, सी 2 चीजें हैं.
खाने में दो चीजें हैं, एक तो है आपको भूख लगे तब खाइए, है आपने बहुत दिन से पुचका नहीं खाया है, भेलपुरी नहीं खाई है, आइनॉक्स सिनेमा पिक्चर देखने जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं तो हीरोइन रो रही है, आप भी साथ में रो रहे हैं, आप भूल गए हैं कि आप कैरामलाइज पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं और कोक भी पी रहे हैं. You see, you are not eating because you are hungry. It is part and parcel of the environment. It is the experience. So food should not, food has become an experience today. Food should be eaten when you are hungry. So that is the most important thing. So that is one. The other thing is quantity. Okay. तो बेसिकली लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, तो एक प्लेट में जितना आता है उतना खाइए, मगर जो होता है लोग क्या है बार बार लेते हैं. सो इट इज क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड. तो क्वालिटी जो है वेरी हाई प्रोसेस्ड फूड्स जो है उसको आप अवॉइड कीजिए. You know one thing, Jitin, when the patient they come in, they will ask me about हम लोग potatoes और rice खा सकते हैं, because it is actually a carbohydrate metabolic disorder. People have this notion that they should not eat potatoes and rice and they should stop it altogether. But let me here clarify that there are two kinds of carbohydrates. One is simple and one is complex. The simple carbohydrate is something that when you eat, it will taste sweet, your taste buds. So that you should not be eating, like sugar, sugarcane juice, or mangoes or something like that. But potatoes, and they are not sweet when you eat it. So that takes time to digest and for the sugar levels to rise. So I think if you stop eating potatoes and rice, what is the next option? The ready-made meals like the chivda, the oily foods, because you're not going to prepare something if you're hungry. And that's a basic staple meal of India, rice and potatoes. So if you stop eating that, you're going to eat the wrong things, which has got a lot of calories. So I think you should be eating rice and potatoes, and please do not stop eating that. Eat it in small quantities. बट ये बहुत बेसिक मिथ है. मैं हमेशा ये पेशेंट्स पूछते रहते हैं, हमने तो ये बंद कर दिया, ये बंद. हम बोले ये बंद करेंगे तो आप खाएंगे क्या? हम लोग का तो खाना ही है राइस एंड पोटैटोज. सो व्हाटएवर इट इज sugary to your tongue, please don't eat that. Of course you have to eat that, but eat in smaller quantities. But please don't stop rice and potatoes. And actually, if you see the food pyramid that we have got, rice and potatoes is at the bottom. So you can have it. The more foods that you can have it is at the bottom. Okay. A lighter note, Jitin, a lighter note. Sometimes patients ask, Doctor साहब क्या ज्यादा खा सकते हैं? हाँ, तो the answer to that question is ज्यादा आप हवा ही खा सकते हैं. हाँ, मैं वही बोलने वाला था. मुझे मालूम था वही बोलेंगे, क्योंकि सारे डॉक्टर्स यहाँ आके ना बस एक ही बोलते हैं कि आप खाना कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, कोई आपके पास रेमेडी दूसरा है नहीं. हाँ, नहीं, Okay, आप शौक के लिए मत खाइए, आपको भूख लगी आप खाइए ना. Okay, I have unmuted 1, 2, 3, 4. You can ask a question, Mr. 1, 2, 3, 4. Yeah. Yeah. Hello, it's Pradeep Botra here. Jitin. हाँ जी बोलिए सर. हाँ जी. डॉक्टर साहब, मेडिसिन ये कहती है कि डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता. आप कह रहे हैं कि हो सकता है 5 से 10% रिवर्स हो, लेकिन 90 to 95% चांसेस कम है. ये इसलिए कम है कि आदमी अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, या इसलिए कि ये पॉसिबल ही नहीं? नहीं, दोनों चीजें हैं एक्चुअली. एक तो है कि हैबिट्स बहुत साधारणतः 90-95% पीपल हैबिट्स चेंज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जब आपको तकलीफ नहीं होती है तब आप हैबिट नहीं चेंज करते. अगर आपको हार्ट अटैक होने वाला है, आप कल से डाइट पे आ जाएंगे. मगर आपको कुछ नहीं हुआ है, खाली शुगर ज्यादा है, क्योंकि उसमें तकलीफ नहीं होती है, तो पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बेसिकली चेंज देयर लाइफस्टाइल. दूसरा ये है, डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है. तो जैसे जब शुरुआत होती है तब ऑलरेडी आपका 50% इंसुलिन तैयार करने की क्षमता चली गई है. 50%, 100% से 50% पे आ गए हैं आप ऑलरेडी. तो जितना टाइम जाएगा वो 50 का फिर 40 होगा, 40 का 30 होगा, 30 का 20 होगा, और 10 के नीचे जब चला जाता है तब जो लोग आज टाइप 2 डायबिटीज और गोलियां ले रहे हैं, वो मे भी 5 साल 10 साल के बाद उनको इंसुलिन भी लेना पड़े, क्योंकि 10% के नीचे जब इंसुलिन तैयार होगा तो फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है. सो दिस इज हाउ इट इज. बिकॉज डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इट इज बेसिकली डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू बेसिकली कंट्रोल. थैंक यू. सीमा जी आप पूछिए प्लीज. I just wanted to ask Dr. Sir, some people have low sugar,
Like I have fasting of around 70 and PP around 126, 128. So is it okay, or what should I be doing for keeping myself sane from getting diabetic in future? Thank you, Seema, for asking that question. The thing is that your sugar is not low. समस्या ये हो गई है कि अगल बगल वाले का शुगर ज्यादा है तो आपको लो लगता है. इनफैक्ट आपका नॉर्मल है, अगल बगल वाले का ज्यादा है. नहीं, but it is the same thing. Is the same thing as my son. He is of normal weight, but all his cousins are overweight. तो जब भी हम फैमिली में मिलते हैं तो लगता है तुम्हारा लड़का दुबला क्यों है? तो दुबला मेरा लड़का नहीं है, आपके सब बच्चे से ओवरवेट है, मेरा लड़का सही वजन है. So this is how it is. This is how you look at it. Your blood sugar, I can reassure you, is completely normal. So what can I do ki later on I don't get become diabetic? Like I think whatever you're doing is working for you. Keep doing what you are doing. And unless your family history is very strong, the best thing you can do is, because diabetes is a silent disease to begin with, you must just check once a year or once in 2 years, check your blood sugars to see that has diabetes come set in or not. क्योंकि जब आपका शुगर जिस दिन 200 हो जाता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है. कुछ लोगों को तो जैसे बताया मैंने कैंप में मालूम पड़ता है कि 300 350 है. So it is a silent disease, मालूम नहीं है. अगर आप चेक करवाएंगे तो शायद you will be able to catch it early. आपको जल्दी मालूम पड़ जाएगा आपको हो रहा है तो आप थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन ले सकते हैं. And another question was, how can we activate our pancreas like people who are diabetic? See, there is no way of you activating the pancreas, honestly speaking. What you can do is essentially make your insulin, which is produced by the pancreas, work better. To make it work better, you have to do regular exercise. Okay. Okay. Thank you, doctor. So, जो बन रहा है वो अच्छी तरह से काम करे, you have to do exercise. Thank you. Kavita ji, are you there? Kavita ji, are you there? Yes, yes. Okay. Kavita ji, you ask questions quick. फटाफट पूछिए. Yeah, okay. It is said that diabetic medicines get muscles weak. Is it true? No, diabetes medicines don't make muscles weak. Basically, it is poor diabetes control which makes muscles weak. But your sugar is not under control, that's why it has become. Great. Next question. It is the disease, not the treatment. What effect does yoga and pranayam help in curing diabetes? Does it have an impact? Yoga. See, yoga is also a form of exercise. So I have mentioned to you earlier, basically if you do some form of exercise, basically sugar gets used, your insulin works better, so your sugars will be controlled. So yoga also helps. Other forms of exercises, Baba Ramdev exercises also helps. Any form of exercise, you call it whatever you like. Okay, if you move your arms and legs, if you play a game, if you walk, if you run, if you jog, okay, basically your sugars will be better. Okay, next question. Sugar-free or stevia, is it okay? Any side effects? See, if you take in moderate quantities, basically there's no side effects of sugar-free. Most of my patients, including they ask Falguni as well when they come, because sugar-free se suna hai cancer ho jata hai. And that is the worry that people have. No, cancer has been seen that it happens when it is used in more than 500 or 1000 times the dose in animals. There are no reports of basically sugar-free producing cancer in human beings. If it was the case, already in America, there would have been big lawsuits for millions and millions of dollars. Diet Coke is not only prescribed to be taken by patients with diabetes, but even people who are healthy and don't have diabetes also, they are taking Coke Zero and Diet Coke. So it actually is not harmful. That chemical is not harmful. What are the early symptoms of neuropathy? I get sweating during night. Is it due to this? The audio is not clear, Jitin. And the audio is not clear. Yes, I know. Ranjan ji, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Ranjan Goenka ji? Yeah, Ranjan ji. Yes, can you hear me? Yeah, बोलिए. Yes. Yeah, basically I'm having a fasting, a blood sugar of about 120, 125. It has been seen quite a number of times that after having a normal lunch, when I take my PP sugar, it actually falls down to 100, 105. But I'm not able to understand this phenomena.
Okay, so you do have diabetes and you are taking medicines for it or not? Yeah, I'm taking a medicine, Janumet 50 by 1000 in the morning, and I take the same dose late in the evening, after just before my dinner. Any other medicines you take? But nothing for diabetes, but I'm having one medicine that is called Tazloc Trio, which is basically for BP, blood pressure. Right, again, right in the morning. Sure. So actually, if you technically see, your fasting sugar is slightly on the higher side. Okay, थोड़ा सा ज़्यादा है. That means the Janumet that you are taking is not controlling your fasting as best as you like it to be, but it is managing to control your PP sugar. आपका पोस्ट पैंड खाना खाने के बाद शुगर कंट्रोल में है. तो दवाइयां जो लोग लेते हैं उसका ऐसा हो ही सकता है कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो आपका पीपी शुगर ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, मगर आपका फास्टिंग शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. तो शायद आपको, अगर आपका हेमोग्लोबिन A1C, आपका एवरेज शुगर लास्ट 3 महीने का अगर ज्यादा है, तो जरूरत है आपको ये दवाइयां थोड़ी चेंज करनी. मगर अगर आपका हेमोग्लोबिन A1C ठीक है, मतलब 7 के नीचे 6.5 तकरीबन है, तो इससे थोड़ा भले ही फास्टिंग शुगर ज्यादा है, तो अभी फिलहाल उसको चला सकते हैं. You can continue with this and then maybe recheck after 3 or 4 months. Thank you, sir. Thank you, Ranjan ji. Thank you. Kavita ji, get ready with more questions. In the meantime, there's one question that's come up. Should they have fenugreek powder in the morning, or have the water in which fenugreek has been soaked? Kuch hota hai kya? Yeah, actually, what happens? The bitter Karela, bitter gourd, and people have this in their mind that actually reduces your blood sugar levels. There's some truth in it. There's some truth, but I don't think so. You can control your blood sugar levels just by having this fenugreek seed water or Karela khake hoga nahi. Because after all, so many medicines are available in the market to just control your blood sugar level. So usse kuch hone wala nahi hai. And if you try and just take it for a prolonged period of time, because diabetes doesn't have any symptoms, you think that, okay, fine, this is all working, all fine for me. But if you see and check it after 6 months, then maybe your blood sugar is really spiked up. So I think you cannot just depend on the fenugreek seed water. You have to keep on checking your blood sugar levels, and then you need to see that you are fine with that, or else you need to visit the doctor if it is high. So, in short, fenugreek may have certain properties, but the properties are fairly mild. बहुत strong properties नहीं है. So you must check that whatever you are doing is working for you or not. अगर आप करेला पी के, if you are happy, झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, तो and your sugar is under control, आप करेला खाइए, कोई बात नहीं. But the fact is, मूड खराब करने और मुंह खराब करने की जरूरत नहीं है. आजकल दवाइयां मिलती हैं जो बहुत आसानी से शुगर कोटेड भी मिल जाती हैं, तो आपको कड़वा दवाई या कड़वा खाना खाने की जरूरत नहीं है. There's one more question that patient asked me, Jiten, that what is the side effect? इतनी सारी medicines लिख दी है, they come out of Sanjay's chamber and then they come to me. I said, see, there's only one side effect, you will live longer. That is what we see. ठीक है भाई, लोग दवाई ले लिया करें, अपना शुगर को कंट्रोल करें. एक क्वेश्चन और आ गया है. गौतम चावला, यू आर अनम्यूटेड. हेलो, अनम्यूट कैसे? अनम्यूट हो गया. हेलो, नमस्ते जी. नमस्ते जी. आई एम 73 years old. Diabetes record is for the last 20 years, but my diabetes is fully in control due to medicines. Agreed. The problem is there's a sensational burning on the feet and numbness. Sure. That's the only problem now. Okay. आप वेजिटेरियन हैं? हाँ, वेजिटेरियन है. तो बेसिकली जो है, अगर शुगर कंट्रोल में है और आपकी नसें खराब हैं, तो लेट अस फर्स्ट थिंक दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शुगर. तो वेजिटेरियनों को विटामिन B12 डिफिशिएंसी होता है. अच्छा. तो आप विटामिन B12 वगैरह लेवल चेक करवाइए. अगर कम है तो B12 अगर आप लेंगे तो आपकी जो तकलीफें दूर हो जाएंगी. Thank you very much. That's a very good guidance. डैडी जी नमस्कार. नमस्ते. और डॉक्टर साहब ये हमारे ससुर जी हैं. ठीक है सर. मैं एक मेटामॉर्फिन ले रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. हाँ ठीक है. थैंक यू. ओके. कुछ बोल रहे डैडी जी?
नहीं Okay, we move on to the next question. Kavita ji, you have a question lined up? Yes. I have few questions lined up. पूछिए. The first question is, if sugar is 100, then sugar in tea is recommended or not? First question is, if you have diabetes, try to use sugar substitutes, sugar free, जो भी है, aspartame, sugar free gold, जो आपको भाता है, use that. If you have diabetes. If you do not have diabetes and your blood sugar is 100, you might as well have the tea and the ice cream or whatever you like. It's not a problem. Okay, walnuts and almonds. Is good for intermittent diabetes. fasting? Sorry, you ask. आप थोड़ा जल्दी पूछिए, ऐसा लगता है आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, तो you have to be little fast, कविता जी. पूछिए. No. Is intermittent fasting helpful? See, it all depends. If you have got diabetes, if you are fasting intermittently, then you have to basically be absolutely sure जिस दिन आप fast कर रहे हैं, आप दवाई ले लिया तो sugar घट ना जाए, doesn't fall too much. So intermittent fasting has to be done according to your blood sugar testing, and your medicine dose has to be adjusted accordingly. If you don't have diabetes, intermittent fasting is fine, not a problem. Okay, I am asking next question. What is the normal level? अच्छा पूछिए आप पूछिए. Okay, आप you go शांत ahead. हो जाते हैं. One more question from Kavita before you ask. Okay, one last question from Kavita. Yeah. What are the early symptoms of neuropathy? I get sweating during night. Is it due to this? राठी जी को कौन अनम्यूट कर दिया? राठी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? The common symptoms of neuropathy is numbness and tingling. It usually starts in the feet and it progresses gradually. It climbs upwards up to the knee. When it reaches the knee, then your hands start tingling. Okay, so that is the most common symptom of neuropathy. Sweating is usually a late symptom. It's not an early symptom. Okay, when you get autonomic neuropathy, जब आपकी पाँव की नसें भी खराब हो रही हैं, फिर उसके बाद आपके हार्ट की नसें, पेट की नसें, तब जाके स्वेटिंग, ये सब ग्लैंड्स भी कभी कभार स्वेटिंग हो जाता है. कॉमनली डायबिटीज में जब स्वेटिंग होता है, तब यूजुअली देयर आर टू थिंग्स. If it is because of sugar, आपका शुगर रात को घट गया है, it has become low, hypoglycemia हो गया, less than 70, then you can get sweating. और जिस चीज का हमेशा सबको डर रहता है कि हार्ट में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, so that is also a possibility. अगर आपको कुछ हार्ट में कुछ तकलीफ हुई हो, तभी भी आपको स्वेटिंग हो सकता है, तो चेकअप करवाना जरूरी है. It is not an early symptom of diabetes, sweating. कविता जी, next question. पूछ लीजिए. Okay. Does diabetes affect the behavior of a person? Yes, it does affect, because today if I am say not diabetic and somebody tells me that आपका report आया है blood sugar ज़्यादा है, what will happen? Man, a person, individual, everybody is different. They go through different phases. First they go through denial. Denial मतलब क्या, ना ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, इसलिए क्या करते हैं, और एक लेबोरेटरी में जाते हैं चेक करवाने के लिए कि जो पहला लेबोरेटरी जो टेस्ट था वो ठीक था. तो उसमें जब थोड़ा सा ज्यादा आता है, मगर 2 नंबर तो एक साथ एक ही आएगा ऐसा नहीं है, कम आता है तो आपको कम में ज्यादा विश्वास हो जाता है, जो बढ़ा हुआ है उसमें विश्वास नहीं होता है. मगर वो भी अगर थोड़ा सा ज्यादा आता है, लगता है कि ये तभी भी सही नहीं, 3 दिन 5 दिन में थोड़ा डाइट एक्सरसाइज करके फिर लेबोरेटरी में दोबारा करवाऊंगा. Okay, so people's behavior change, their diet changes, their exercise changes. Okay, so diabetes, and it changes, depends also on who gets diabetes. If my wife knows about the fact that my blood sugars are high, मेरा खाना तो चौपट हो जाएगा. हाँ, रोज झगड़ा होना चालू हो जाएगा on the dining table. Because we get families of couples which come, basically husband comes complaining about wife, देखिए मुझे तो भात भी खाने नहीं देती हैं, आलू रोज सवेरे करेला फेनुग्रीक पानी पिलाते हैं, करेला जूस, लौकी का जूस पिलाते हैं. तो दिस इज हाउ इट इज. सो जिसको है उसको ये सब नहीं करना है, मगर द पर्सन हु इज अ वेल विशर, माय वाइफ इज अ वेल विशर ऑफ मी, बट शी वांट्स मी टू हैव द करेला जूस, हैव द लौकी जूस, and so these behavioral changes start happening.
there's a fighting, a coping mechanism. So there are many ways in which basically people behave as a consequence. People also, when they develop, say, pain, breathlessness, then they get depressed also. ऐसा लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ आस्ते आस्ते. I'm dying slowly. So that is also one more reaction that happens. If you suddenly decide, we all know that we are going to die, but now I can feel that I'm going to die, then again you basically change the way you behave every day. So there are many facets to this behavioral change, okay? And it all depends upon where you are in the curve in your life also, and how everybody else around you also reacts. इसलिए कभी-कभार जिसको diabetes है वो दूसरों को बताना भी नहीं चाहता है कि मुझे diabetes है, क्योंकि then people behave differently with that person also. सर आप बहुत मीठा बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं. Let me answer that question. यहाँ पर I have seen on the chat that there are few questions that have already been addressed. सारे आंसर हो चुके हैं. Like somebody's asked for the random blood level, sugar का blood levels. Already answer हो चुका है. मगर simple answer है, random blood sugar should never be more than 180. 108. 180. 180. Should never be. Okay, great. Now I'm unmuting Mahendra Rathi ji. He wants to have permission to have one mango every day. Rathi ji. Sir, I'm diabetic, and I for the last one more mango to me. Sir, I am a diabetic person, and I sweat a lot. In the last few days, I've been sweating during the daytime. Is it related to my sugar? For how long have you had diabetes, sir? I've been having for almost 6 years. 6 years. So it's not very long duration. It still might be due to. अगर आपको पाँव में जलन, दर्द, झंझन ऐसे कुछ होता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. शायद आपको नर्व की कोई बीमारी नहीं है, तो स्वेटिंग भी होना नहीं चाहिए उसके कारण. अच्छा. And I just इसके कारण नहीं हो रहा है शायद. आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं? Istamate ले रहा हूँ. अच्छा. And एक और है सर, I just don't remember the name right now. Resacor नहीं, Instamate ही ले रहा हूँ. Only Instamate for diabetes. तो Instamate के कारण आपका sweating होना नहीं चाहिए. तो it's maybe the environment, the गर्मी बढ़ गई है. Maybe. For that matter, or maybe some people have a tendency to sweating. Sweat a lot. One more test that you should perhaps do if you have not done. अगर आपने नहीं करवाया है, तो एक बार thyroid test करवा लीजिएगा, देखने के लिए कि वो सही है. Okay. And I take my medicines regularly. 5 days back, I checked up. It was 380 in spite of taking my medicines. And मैं कोई मीठा वगैरह खाता नहीं हूँ. जरूर. I don't have sugar. I don't have कोई मीठी चीज. चाय में I mix only half a spoon. Hardly. My wife never allows me. What can be the reason, sir? So basically, it means that the Instamate that you are taking is not keeping it under control. It's almost very similar to the fact that आपने मसाला डाला मगर खाना अच्छा नहीं बना, तो क्या करेंगे? मसाला change करना जरूरी है. So I need you need to change the medicine. Change the medicine. It's not working for you. Okay. And sir, are we allowed to have mango once in a while? See, once your blood sugar is 380, if you have mango, it will become 600, sir. No, not during this time. Bed. Correct. And the problem is, in these days of COVID-19, there are not many hospital beds which are willing to take you. Correct, correct. So it's better to avoid. Right. Yes, yes. Thank you very much. महेंद्र जी नया चीज करी आजकल लेटेस्ट डॉक्टर लोग बोलते हैं सूंघ लो खाओ मत, सूंघ लो खाओ मत, विंडो शॉपिंग बोलते हैं इसको. Okay, I am unmuting Darshita Trivedi ji. Unmuting you. Please ask. पूछिए. Good evening, sir. Good evening. Yeah, my husband is 51 years and he just got couple of months back, he got his reports done. His glucose fasting is 111 and PP is 121. So average glucose is showing 140. So I was a little confused whether it is okay or is he pre-diabetic or something. Well, it looks as if he may be what we now medically call pre-diabetes. Okay. Fasting, if it is more than 125, it is diabetes. और खाना खाने के बाद, if it is more than 200, it is diabetes. पर normal होता है खाली पेट 100 के नीचे और खाने के बाद 140 के नीचे. उनका खाली पेट 111 है, तो basically it is pre-diabetes. इनको आगे चल के diabetes हो सकता है, तो थोड़ा ख्याल रखना है. Healthy lifestyle, avoid extremely sweet foods,
basically do regular exercise and basically eat normal diet. दाल भात रोटी सब्जी खा सकते। So does it तो बोलो ज़्यादा खाकड़ा नहीं खाए। Yeah, actually, my father-in-law had a history of diabetes and he died of a heart attack. So that is what he must be more prone to it because of that. It is a possibility, but being Indian itself basically increases your risk because any Indian has approximately 10 to 15% risk. When early on in diabetes, जब आप sugar check करवाते हैं, and at his age, you must definitely check his cholesterol also. Okay. तो उनका लिपिड प्रोफाइल चेक करवाइए क्योंकि यहाँ शुगर का इतना इलाज करने की जरूरत नहीं है जितना शायद बिकॉज हिज फादर डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक दैट उनको कोलेस्ट्रॉल अगर खराब रिपोर्ट आए तो उसका इलाज करना ज्यादा जरूरी है। ओके थैंक यू दर्शिता जी। थैंक यू सो मच। अनम्यूटिंग जेबी नाग जी। जेबी नाग जी को अनम्यूट कर दीजिए रवि जी। Yeah, trying. हाँ थोड़ा सा सर सिग्नल का इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, आई एम गेटिंग सो मेनी कंप्लेंट्स, पीपल कांट एंटर। डॉक्टर नमस्कार, आई एम 63 of age and I am diabetic for last 15 years, more than that. Partly you answered my question about sweating in night. I usually get sweating in night, sometimes 2-3 times even, and you say it may be because of hello. सर आई मस्ट रिकमेंड दैट अगर आपके घर पे ग्लूकोमीटर नहीं है तो आप खरीद लीजिए। नहीं है मेरे पास है। अगर आपके पास है तो आप रात को शुगर चेक करवाइए। है आपको जब स्वेटिंग होता है तो देखिए आपका शुगर कम नहीं हो जा रहा है ना, बहुत जरूरी है जानना। अगर कोई नहीं वो चेक किया डॉक्टर साहब, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, नहीं होता। वो मैंने चेक किया है। ठीक है। अब आपने कहा हार्ट के लिए कुछ हो सकता है, तो जो मेरे में नमनेस कहीं भी नहीं है, मतलब तो हार्ट की मसल्स पे इफेक्ट कब तक आ सकता है? हार्ट के क्या इफेक्ट हो सकता है मतलब इसका? देखिए हार्ट का जो बीमारी है, जितेंद्र साहब ने भी बताया है कि जब इतने साल डायबिटीज हो गया है तो हार्ट की बीमारी साइलेंट हो सकती है, आपको दर्द महसूस नहीं होता, ऐसा हो सकता है। आप अवश्य कार्डियोग्राम करवाइए, इको कार्डियोग्राम करवाइए। अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप एंजियोग्राफी भी करवा लीजिए क्योंकि आपका 63 उम्र है। 63 बेसिकली इज अ रीजनेबल एज है जब ये सब बीमारियां होती हैं। हार्ट की बीमारियां भी हो ऐसी इसी एज में होती है। आपको डायबिटीज है तो जरूरी वो करना जरूरी। नहीं माय क्वेश्चन इज हार्ट मसल्स में साइलेंट अटैक आने के चांस। सॉरी हार्ट मसल्स में क्या पूछ रहे थे? हार्ट मसल्स मतलब जैसे मुझे पेन नहीं होगा, ऐसी स्थिति क्यों होगी? मुझे तो अदरवाइज कहीं भी पिंच होता है पेन होता है मतलब। जरूर, मगर डायबिटीज 15-16 साल हो गया ना तो साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। ओके थैंक यू। आपको हो रहा है ऐसा नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है तो चेकअप करवा लीजिए। मगर ऐसा हो सकता है कि आपने बोल दिया कि नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, तो ऐसा ना हो कि कुछ सीरियस हो जाए। और कुछ प्रिकॉशन की तरह से आपको करवाना है। सर जेबी नाग साहब हमारे रेगुलर आते रहते हैं, सारे शो पे आते हैं। अब हमको लगता है यहीं पर टेस्टिंग ऑनलाइन करना दिखाना होगा उनको कि आपको कैसे टच करो और सब आपका ऑर्गन्स चेक हो जाए। अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन है, एप्पल फोन में हो जाएगा शायद फ्यूचर में, एप्पल फोन इस तरह क्वेश्चन है हमारे पास। we have all talked about high sugar levels. What about low sugar levels? हाँ जी, तो लो शुगर बहुत शॉर्ट में इसको हम लोग मेडिकली हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जो लोग डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं साधारणतः उसको ही होता है। और ऐसी दवाइयां जिसमें आइदर इंसुलिन तैयार ज्यादा हो रहा है उस दवाई से या इंजेक्शन इंसुलिन लेते हैं तब हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या? जब शुगर आपका 70 के नीचे हो जाता है तब हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो उसमें सिम्टम्स क्या होता है नॉर्मली? हाँ, जब वो होता है तब आपको सिम्टम्स जो होता है, पसीना आ जाता है, जैसे स्वेटिंग 2-3 बार कुछ लोगों ने पूछा है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, छाती धड़-धड़ माने पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, अगर आप जागे हुए चक्कर आते हैं, वीकनेस लगता है, वैसे है। और अगर ज्यादा अगर हो जाता है आपका कंसंट्रेशन में लैप्स हो जाता है, मिस्टेक कर सकते हैं आप, चीनी के बदले नमक डाल दिया आपने चाय में, तो इससे सब मिस्टेक होता है। देखने में दोनों एक ही लग रहा है, तो बेसिकली ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है और ज्यादा कम हो जाता है। 40 के नीचे ज्यादा हो जाता है तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, फिट भी आ सकती है, तो वो ज्यादा सीरियस हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया से कहते हैं। उससे बचने के लिए आपको तुरंत कुछ मीठा खाना है,
और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मीठा, मीठा मतलब चीनी खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, तो जो भी चीज है जिसमें चीनी है, मिठाई खा सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं। एक्सीलेंट। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन छोटा सा और है इसमें कि आपको पता है 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया सर, गुजराती पिक्चर खत्म हो गई ऑलमोस्ट। आपको मालूम है गुजराती मूवी छोटी होती है, 90 मिनट की होती है, तो मूवी आपकी ऑलमोस्ट 4 मिनट खत्म हो गई। आप जो बोल रहे थे। एक क्वेश्चन आया है अभी तुरंत कि what are the chances of recovery from kidney failure due to diabetes? Okay, so simple answer है why kidney has failed. Now, if your kidney has failed because of diabetes related damage, देखिए एक पेशेंट जो डायबिटीज है उसको किडनी डैमेज डायबिटीज से हो सकता है या कोई और बीमारी भी हो सकती है। आपका जीवन है तो आपको दूसरी बीमारी लगेगी, आप मर जाएंगे और नई बीमारी नहीं होगी, मगर आपका जीवन है, आप दूसरी बीमारी हो सकती है। तो डायबिटीज के कारण अगर आपका किडनी फेल हुआ है तो वो साधारणतः रिवर्स नहीं होता है, नॉर्मल नहीं हो जाता है, वो प्रोग्रेसिव डैमेज है। तो उसको जब किडनी फेल कर जाती है, अल्टीमेटली आपको जब क्रिएटिनिन ज्यादा हो या पाउंस में सूजन हो, तो उसके लिए किडनी के डॉक्टर जो सलाह देते हैं डायलिसिस करना पड़े या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़े तो वो कर सकते हैं। दैट इज द ट्रीटमेंट। मगर अगर आपकी किडनी डैमेज जो है डायबिटीज के लिए नहीं है, सडनली हुई है, अचानक हुई है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया और किडनी फेल कर गई, या आपको डायरिया उल्टी हो गई है और किडनी फेल। नहीं, वो बोला है, क्वेश्चन ही वैसा है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम किडनी फेलियर ड्यू टू डायबिटीज। अच्छा, ड्यू टू डायबिटीज तो जनरली इट इज परमानेंट डैमेज। ओके, सीमा डागा जी आपने फिर से दोबारा हाथ, आई एम अनम्यूटिंग यू। ये रहे सीमा जी, आप आपका प्रश्न। थैंक यू जेसी। आई जस्ट वांटेड टू आस्क अनदर क्वेश्चन। ये जो डायबिटीज लोगों के पैरों में जो स्वेलिंग होती है, in most of the cases, what is the reason for that and how it can be cured? Okay. So the answer it is that swelling of the feet can be commonly because of many medicines also. कुछ दवाइयाँ, जैसे डायबिटीज में लोगों को ब्लड प्रेशर है उसकी दवाई लेते हैं, तो कुछ ब्लड प्रेशर की गोलियों से भी पाँव में सूजन आ जाता है। मगर जो सबसे ज्यादा रिस्की और जो भय है लोगों को कि पाँव सूज गया मतलब किडनी खराब हो रही है कि नहीं, वो भी उस तरह से ही चालू होता है कि पाँव में सूजन होता है। तो आपको किडनी का यूरिन चेक करना जरूरी है, ब्लड टेस्ट करना चेक करना जरूरी है, लिवर फंक्शन भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि डायबिटीज से सिरोसिस और लिवर भी हो रहा है, तो वो आपको हो रहा है कि नहीं, वो आप ब्लड टेस्ट करने से मालूम पड़ेगा कि आपको उसके कारण हो रहा है कि नहीं। बाकी कारण जो है, अगर आप बेसिकली ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, तो हिस्ट्री लेना जरूरी है, क्या क्या दवाइयां ले रही हैं आप वो जानना जरूरी है, और चेकअप किडनी, हेमोग्लोबिन, लिवर फंक्शन ये भी चेक करना जरूरी है। उस हिसाब से फिर मालूम पड़ता है कि क्यों आपको ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब कंफर्टेबल है ना? 2-4 क्वेश्चन और ले लेना। जरूर सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Taking Ayurvedic medicine or home remedies with allopathic medicine, is it harmful or not for diabetic patients? See, technically speaking, perhaps they are not harmful. मगर होम मेडिसिन एज इन द स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक जो हम लोग खाना खाते हैं, करेला ले या लौकी लिया, उससे कोई डैमेज होने का बात नहीं है, होना नहीं चाहिए। मगर देयर आर सर्टेन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन विच कंटेन्स हैवी मेटल्स, ऐसा जो कॉम्पाउंड्स है, इट हैज बीन रिपोर्टेड द लिवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, तो इन केमिकल से ऐसा हो सकता है। इट इज सोल्ड एज इफ इट इज ट्रेडिशनल चाइनीज हर्बल मेडिसिन या ऐसा कुछ, तो उससे साइड इफेक्ट हो सकता है। मगर ट्रेडिशनल जो चीज हम लोग रोज खाते हैं उसको आप खाएंगे तो उससे आपको कुछ डैमेज होगा नहीं। ओके, तो इन शॉर्ट जो हमने सीखा आज, ये सीखा कि डॉक्टर साहब बोलते हैं अगर आपका शुगर लेवल 200 के ऊपर है और आप दवाई लेते हैं फिर भी घटता नहीं है, तो आप दवाई चेंज करिए, पावर बढ़ाइए, कुछ भी करिए, बट अपने शरीर के ऑर्गन्स को बचाइए, वरना दे विल बी ऑल डैमेज्ड वन आफ्टर अनदर। डू नॉट प्ले एनी अदर, डू नॉट प्ले एनी अदर मेथड्स, डू नॉट ट्राई एनी अल्टरनेटिव मेथड्स। यू मस्ट completely change your lifestyle, increase your medicines, change the generic of medicines, but do not listen to any other theories of life. Save your organs, because it starts damaging all your organs, and that's why they call it the most dangerous disease of all.
डॉक्टर साहब some last कुछ last tips हमारे जो diabetes patients all over India जो देखेंगे इसको या they are going to follow this thing, they want to take back some good tips from you on diabetes. Last tips जो आपने अभी तक बोला नहीं है. आपने शायद सब पूछ ही लिया है जितेंद्र साहब, मगर I would basically try and impress upon the people, diabetes हो जाने से डरना, चेंज करना थोड़ा बहुत जरूरी है, ख्याल रखना जरूरी है. दवाइयां भी हैं which can basically protect you. ऐसी दवाइयां आविष्कार हुई हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिली है, जैसे इंसुलिन को 1921 में मिला था, कि बेसिकली उसके पहले अगर डायबिटीज किसी को होता था तो लोग 1-2 साल से ज्यादा नहीं जीते थे, हैं, गुजर जाते थे. नाउ अगर आप इंसुलिन अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है लेंगे तो आप 75, 80, 90 इयर्स ऑफ एज तक जी सकते हैं. सो डरने की बात नहीं है, दवाइयां हैं, मगर आपको रेगुलर चेकअप में रहना है. हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर चेकअप रहने से यू कैन लीड अ कंप्लीटली नॉर्मल एंड हैप्पी लाइफ विद डायबिटीज. Excellent. Doctor साहब कोई नंबर आप देना चाहेंगे, because there are a lot of people who are asking for your references and numbers. Would you like to spell out, say the number? So you can jot down my number. My mobile number is 98-300 51595. और एक नंबर है फाल्गुनी का, you can contact her also. 98-305 24335. So फाल्गुनी जी का 98-305 24335. So you can contact any of us and perhaps we can basically address any of your problems. और आपको रेफरेंस देना है सिर्फ पापा जैसी टॉक शो का, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे. Before I sign off, can I ask a simple question? Please. Can I ask people to answer in the chat box? Just or yes, we will talk again about it. That is diabetes. Is it only good enough to control blood sugar? If you say that is true, write 1. And if you think that you need to do more than just checking blood sugar, then write 2. I just want to know how many people believe that you need to do more than blood sugar control in diabetes. Let me just rephrase it, because this is a question created by me. So is treating sugar is treating diabetes? If that is the answer. Treating sugar is as good as treating diabetes. So we want to know that if people even say yes or no, and they need to justify that as well. Answer 1, if sugar only is good enough to control diabetes. And answer 2, if you think that you need to do more than just controlling blood sugar. Is treating sugar is treating diabetes? Okay. So, the answer is, you've given the answer. But we want to know from the people, what do they think? Maximum are coming with 2 second option. सारे के सारे 2 लिख रहे हैं. तो आपका प्रोग्राम हिट है, लोगों ने सुना है सर. I know, because when we do camps, people do not understand that very अरे आपको पता नहीं है, हमारे पास ऐसे महारथी है जो ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि हम घबरा जाते हैं. ऐसा भी कुछ हो सकता है और फटाफट क्वेश्चंस आते हैं. But thank you so much, Dr. Saab, for coming. It was such an honor to host both of you. You've answered so many questions. And please help if they come to you for their issues. Do help them. And as a Papa JC banner. Thank you so much. Definitely. Thank you once again. Thank you, Ravi ji. Thank you, Doctor. Thank you so much. Thank you, ma'am. And definitely, Jiten ji. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. जाते question आ गया. Can we have good? Can you have good? देखिए, चीनी is 100% sugar. Good perhaps is 95% sugar. ले, हो गया. Chapter close. Bye. Thank you so much. Thank you, friends. Bye, Ravi. Thank you. Thank you, Kavita.